कैसे हो सब। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इफ़ IPL डजेंट हैपन हु विल बी द बिगेस्ट सफरर्स एज इंडियन प्लेयर्स, जिनका वर्ल्ड T20 में सिलेक्शन होना एक डाउटफुल हो सकता था, और अगर IPL नहीं होता तो उनको परफॉर्मेंस करने का चांस नहीं मिलेगा और इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से मैंने इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ आज के वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 3 इंडियन प्लेयर्स की कि अगर IPL नहीं होता तो व्हाट विल हैपन टू देयर करियर्स। आई मीन इस वीडियो को ना ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ द मोस्ट अवेटेड मैन की, MS धोनी। व्हाट विल हैपन एंड व्हाट्स हिज फ्यूचर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Number 1 on my list. Any guesses? It has to be MS Dhoni. Well, before making any statement regarding MS Dhoni, let me tell you that it's just the speculations of things which we can draw from what MS Dhoni is trying to do at this point of time, rather than making an official statement. So I am just putting my suggestion, what I personally feel would happen, rather than making an official statement. And for those of you who think that IPL would be a benchmark for MS Dhoni, then let me tell you that MS Dhoni is too big a player. He's just too big a player to be judged on his IPL performances. MS Dhoni, the IPL player. MS Dhoni, the wicketkeeper batsman. MS Dhoni, the captain. It has always been a success. हरभजन सिंह ने भी यही कहा है कि MS धोनी की IPL performances should not be a criteria to judge him for the T20 World Cup squad. Suresh Raina, in conversation with Vikrant Gupta, said the same thing, that he is hitting the ball a long way and there's a lot of cricket left in him. What I personally feel is he'll come to India. He'll actually rescue India, and that depends a lot on Rishabh Pant's form. That depends a lot on whether India has an experienced middle order, and that depends a lot whether India has the finishing abilities or not. I know Hardik Pandya is there, but अगर हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं तो India doesn't have a recognized middle order finisher, and that's why I feel MS Dhoni would only come to or play for India in the near future only if India needs MS Dhoni, rather than MS Dhoni needing India. So who is number 2 on my list? It's a 22-year-old guy who is considered to be the next MS Dhoni. Yes, I'm talking about ऋषभ पंत. अगर IPL होता है तो ऋषभ पंत को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर IPL नहीं होता तो he might lose his position in the playing 11 to KL Rahul as the wicketkeeper batsman. ऋषभ पंत का फॉर्म, ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग एबिलिटीज एंड ऋषभ पंत की मैच्योरिटी will determine a lot whether he'll be in the playing 11 or not. Number 3 on my list, it's another wicketkeeper batsman. It's a 35-year-old wicketkeeper batsman whose career-defining moment was considered to be the Nidahas Trophy final. And yes, indeed it was. But along with it, मुझे क्या लगता है, दिनेश कार्तिक इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2018, जब उन्होंने 22 रन मारे थे इन 18 बॉल्स, उनकी मैच्योरिटी वहाँ पे भी दिखी थी एज अ फिनिशर. एंड दैट्स व्हाई आई फील इन 2019 का भी जब उनका इंक्लूजन हुआ था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो आई वाज एक्चुअली हैप्पी रादर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिनेश कार्तिक वाज द चूजन एंड द राइट ऑप्शन. बिकॉज अगर हार्दिक पांड्या आउट जाते तो इंडिया डजंट हैव अ फिनिशर. MS Dhoni, if he is not in the mix, then Dinesh Karthik should be the preferred option, and that's why I've kept Dinesh Karthik at number 3. So, अगर IPL नहीं होता है तो उनकी फिनिशिंग एबिलिटीज अंडर क्वेश्चन होंगी अगेन, एंड BCCI might look at a different option, or the team management might look at a different option, considering the age factor as well. That's not a factor that should be considered, but in reality that's considered a factor. So that's it in this video, guys. If you like the video, do give it a thumbs up. Motivation मिलता है वीडियो बनाने का. And share the video and subscribe to my channel along with pressing the bell icon if you want more such updates regarding cricket.